हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीबी मेडिकल क्लासेस। और आज का टॉपिक है फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक्स गायनिकोलॉजी का। एंड नेक्स्ट, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. So, introduction. Fetal growth and development is a complex, highly organized process that takes place over approximately 40 weeks of pregnancy. It is generally divided into three main stages. तो जनरली जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, क्योंकि एक पूरा सेल से पूरा एक ह्यूमन बॉडी बनती है. तो approximately it will 40 weeks of pregnancy it will take place, and 37 to 40 is a normal week, means normal time duration of the pregnancy. Now the main three stages. First one is germinal stage. So week first and second begin at the fertilization, when the sperm cell unite with the egg and to form the zygote. So when a sperm and egg cell meet, they begin fertilized, and that union of sperm and egg is called zygote. So zygote travel from the fallopian tube and undergo a rapid cell division called cleavage. Around 5th day, it became blastocyst and implanted to the uterine wall around 6 to 10. Okay, so uterine wall means if once the zygote embryo is implanted into the uterus, it will be grown in the uterus till it will deliver. So the pregnancy begin to form to support the developing embryo. Next, second one is embryonic stage. As the week 3 to 8, this is a critical period for organ formation, organogenesis. Major systems start to develop. So in this embryonic phase, there are major organogenesis, means formation of the organs. So first one is neural tube. So future brain and spinal cord. The heart begin to be beating around 5th week. Next, limbs, eyes, ear, digestive, circulatory system also develop in this week. And embryo is highly sensitive to the environmental influences, medication and infection. So next, fetal stage, week 9 to 40. So the embryo is now fetus. Okay, from 9th week to 40, the embryo is called the fetus. Next, growth and maturation of organ and tissues dominate this phase. And next is the first trimester. So all the major organs are formed but not fully functional. External genitalia becomes to develop, and head approximately large compared to the body. So second trimester, rapid growth in the length, skeletal begin to ossify, fine hair lanigo and waxy coating is called vernix gaseosa appears. By week 20, fetal development quickening may be felt. Next, gender can often be determined via ultrasound. So next third trimester, which is week 27 to 40, the significant weight gain and fat accumulation, lung maturation, surfactant production increases after week 32, and also brain start to develop rapidly. So next is fetus assumes high head down position from birth cephalic presentation, and next by 37th week the fetus is considered as a full term. Next, we are dealing with now per week, means from first week to till 40 weeks what are the changes and the development in the embryo. So we are going to see that. So first, embryonic period, as I already told you about, there is week first to 2 and there is no development since the fertilization does not occur actually. So once fertilization occur, there will be development of the embryo. So when we call the axel embryo or zygote embryo on the 5th to 7th day, okay, fertilization occurs and form the zygote. So embryo
hatched from the protein cell and perform implantation on the 5th to 6th day. This is very important, and it also asks in many examination when will be the zygote and the fertilization occur. So it is the embryonic 5 to 7 days fertilization occur and form a zygote. Next, week 4th, day 22 to 28 from LMP. LMP means last menstrual period. Okay, so the embryonic age is 2 weeks. Trophoblast cell surrounding embryonic cell proliferate and invade deeper into the uterine lining, because once the pregnancy confirmed, now the trophoblast layer will be attached deeper to the lining of the uterine. Okay, then form placenta and embryonic membrane and formation of the yolk sac, and primitive strix develop at the 13th day and primary stem villi appears at the 13th day. So next, week 5th, the gestational age 4th week. अब जो embryonic age है, that is week number 3. A notochord form the center of the embryonic disc on the 16th day of fertilization. A neurogroove, future spinal cord, which is called future spinal cord, forms over the notochord with a brain bulge at one end. Neuromeres appear at the day 18th. Now the day 20 somatize the division of future vertebra and primitive heart tubing is forming. Vasculature begins to develop an embryonic disc. So this is all on the 4th week. Embryonic age, notochord development to the center, and there is a division of future vertebra and heart tube is forming. Next, week 6th, gestational age 5th week and embryonic age 4th weeks. So these are the events. Embryo measure 4 mm, the heart bulge and begins to beat in a regular rhythm. So the neural tube closes, arms burst and a tail are visible, and pulmonary primordium appears, and the hepatic plate appears, and buccopharyngeal membrane ruptures. This forms the future mouth. Anterior and posterior horns differentiate in the spinal cord. So this is all about the 6th week. There will be heart bulge, neural tube, and arms burst and tail are visible. So next, week 7, embryonic age 5th, and the events are: the length is 9 mm, length pits and optic curves develop, and nasal pits forms, and brain divide into 5 vesicles including the early telencephalons. Leg buds form, the metanephros and precursor of kidney start to develop, and stomach differentiation has to begin, because the embryo is called egg-cell-like structure, like circular structure. Now the embryo is developing into fetus, and fetus is our organ. Fetus is the whole human being, means a baby. Okay, so the legs birds are forms and stomach differentiation begins. And next, week 8, the embryo measures 13 mm, the lungs begin to form and the brain continues to develop. Arms and leg have lightened with the foot and hand areas distinguishable, and the hand and feet have digits but may still be webbed. The gonadal ridge begins to perceptible and the lymphatic system begin to develop. Main development of external genitalia is started. So next, week 9, embryo measures 18 mm in the length. Fetal heart tone, the sound of the heartbeat can be heard using Doppler
So the nipple and hair follicle begins to form. Location of the embryo and toes are visible. Spontaneous limb movement may be detected by ultrasound, and all essential organs have at least begun. So the vitelline ducts normally closes. So the heart sound can beat and you heard using Doppler on the 9th week. So fetal development from the 10th week of gestation, 8th week of embryonic, the developing organism is called fetus. All the major structures are already formed in the fetus, but they continue to grow. Next, week 10 to 12. So embryo measures 30 to 80 mm. The intestines rotates, facial features continue to develop, and the eyes are more developed, and the external feature of the ear begin to their final shape. Okay, so next, head comprises nearly half of the fetal size, and the face is well formed. The eyelids close and will not reopen until about 28th week. So tooth buds appear. The fetus can make a fist with its fingers. Genital appears well differentiated, and red blood cells are produced in the liver. So the facial features, eyelids and face formed during this 10 to 12 week. So next week 13 to 16. The features reaches a length of about 15 centimeter. A fine hair called lanugo develops on the head. Fetal skin is almost transparent. So more muscle, tissue and bones have developed, and the bones become harder. Sucking motion are formed with the mouth, and meconium is made in the intestinal tract. Meconium is fetal stool. So the liver and pancreas produce fluid secretion from 13th week. Sex prediction at the 13 weeks, and at the week 15 main development of the external genitalia is finished, abdominal wall closed. ओके तो इन 13 to 16 वीक क्या होगा, लैनिगो डेवलप्ड हो जाएगा एंड ऑन द हेड. ओके, और मोस्टली जो फीटल स्किन है वो ट्रांसपेरेंट दिखेगी, एंड जो सकिंग मोशन है वो माउथ से स्टार्ट मीन्स मेड ऑफ फॉर द माउथ, एंड द लीवर एंड पैनक्रियाज हैं वो फ्लूइड सिक्रेट करने लग जाएंगे, एंड 15th वीक में जो मेन डेवलपमेंट है एक्सटर्नल जेनिटलिया का वो भी फिनिश हो जाएगा, एंड जो एब्डोमिनल वॉल है वो क्लोज रहेगी. ओके, और मेकोनियम जो स्टूल है वो भी इंटेस्टाइन में जो ट्रैक है उसमें बनने लगेगा. सो नेक्स्ट week 17 to 21. The fetus reaches a length of 20 centimeter. Lanugo covers the entire body. Eyebrows and eyelashes appears. Nail appear on the fingers and toes. The fetus is more active with increased muscle development. Quickening usually occurs. The mother and the other can feel the fetus moving. The fetal heartbeat can heard with a stethoscope. नाउ इन द वीक 17 to 21 यहाँ पे जो फीटस है उसका लेंथ 20 सेंटीमीटर होगा, और जो लैनिगो है वो पूरे पार्ट को कवर करेगा, और जो आईब्रो है और आईलैसेस हैं वो भी अपेयर होने लग जाएंगी, और जो नेल्स हैं फिंगर्स में टो में वो भी अपेयर होने लग जाएंगे. और इस जो ये वीक है इसमें जो फीटस है वो बहुत एक्टिव है, और इसमें क्विकनिंग जिसे हम फीटल मूवमेंट भी कहते हैं जो कि फेल्ट बाय होता है बाय मदर से, सो वो भी फील होने लग जाएगा. और ये सिर्फ मदर को नहीं, अगर मदर के साथ और भी फैमिली मेंबर्स हैं वो भी उसको टच करके फील कर सकते हैं कि क्विक ये स्टार्ट हो रही है.
एंड द फीटल हार्ट बीट कैन बी हेयर बाय स्टेथोस्कोप से फीटल हार्ट बीट भी सुनाई देगी। और इसी में एक वर्ड है लेनिगो कवर द इंटायर बॉडी। लेनिगो एक सॉफ्ट फाइन अनपिगमेंटेड हेयर्स होते हैं जो कि फीटस में या न्यूबॉर्न में रहेंगे ही रहेंगे। मीन्स ये ग्रोइंग हेयर फॉलिकल्स होते हैं और जनरली ये इसी वीक में अपीयर होने लग जाते हैं बॉडी में। Next week 23. So the fetus reaches a length of 28 centimeter. The fetus weighs about 925 gram. Eyebrow and eyelashes are well formed. All of the eye components are developed. The fetus has a hand and straddle reflex. Footprint and fingerprint continue forming. Alveoli air sac are formed in the lungs. So फीटस वेज कितना होगा 23 वीक में इज 925 ग्राम। उसकी आईब्रो आई लेसेस सब वेल फॉर्म्ड हो जाएंगी और जो आई कंपोनेंट है वो भी डेवलप हो जाएंगे और जो हैंड स्टैटल रिफ्लेक्स है वो भी स्टार्ट होने लग जाएगा और इसमें फुटप्रिंट्स फिंगरप्रिंट्स ये कंटिन्यू फॉर्म होंगे बच्चे की। ओके, बच्चे इन द सेंस फीटस। नेक्स्ट एल्वुलाई एयर सैक आल्सो फॉर्म्ड इन द लंग्स। Next, week 27. The fetus reaches a length of 38 centimeter. The fetus weighs about 1.2 kg. The brain develops rapidly. The nervous system develops enough to control some body functions. The eyelid open to close. The respiratory system, while immature, has developed to the point where gas exchange is possible. So on week 27, फीटल का जो लेंथ है वो दैट इज 38 सेंटीमीटर और जो फीटस का वेट है दैट इज 1.2 kg। एंड जो ब्रेन है फीटस का वो रैपिडली डेवलप होगा और जो नर्वस सिस्टम इतना इनफ डेवलप हो जाएगा जिससे कि वो कुछ बॉडी सिस्टम या बॉडी के जो फंक्शन है उसको कंट्रोल कर सकता है एंड जो आई लिड्स हैं वो ओपन और क्लोज हो सकती है। नेक्स्ट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो थोड़ा इमैच्योर रहता है ऑन द 27th वीक एंड एक्चुअली इसमें इतना इमैच्योर रहता है कि जिससे कि जो गेज एक्सचेंज है वो डेवलप इतना नहीं हो पाता। Next, week 31. The fetus reaches a length of about 38 to 43 centimeter. The fetus weighs about 1.5 kg. The amount of body fat rapidly increases. Rhythmic breathing movement occurs, but lungs are not fully mature. Thalamic brain connection, which immediate sensory input forms. Bones are fully developed but still soft and malleable. The fetus begins shortening and a lot of iron, calcium and phosphorus. So on 31st week, the length of fetus is about 38 to 43 centimeter. Now the fetus weight is about 1.5 kg weight होगा और generally जो अमाउंट ऑफ फैट है वो रैपिडली इंक्रीज होगा फीटस में एंड जो रिदमिक ब्रीथिंग मूवमेंट है वो भी अकर होंगे बट लंग्स फुली मैच्योर नहीं रहते 37 वीक में। देन इसमें जो थैलेमिक ब्रेन कनेक्शन है और जो सेंसरी इनपुट्स हैं मीडिएट्स हैं टर्स हैं वो फॉर्म हो जाएंगे एंड जो बोन्स होंगी वो फुली डेवलप्ड हो जाएंगी बट बहुत ही सॉफ्ट रहेंगी फीटस की बोन्स। नेक्स्ट इसमें फीटस 31 वीक में स्टोर करने लग जाते हैं आयरन कैल्शियम और फॉस्फोरस को भी। नेक्स्ट वीक 35 the fetus reaches a length of about 40 to 48 centimeter. The fetus weight about 2.5 to 3 kg. Lanigo begins to disappear. Body fat increases. Fingernails reaches the end of the fingertips. The baby born at 36 weeks has a high chance of survival but may require medical intervention.
नाउ द वीक 35 कुछ चेंजेज आते हैं फीटस में, वो है कि उसका जो लेंथ होता है वो 40 to 48 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल फीटस का, और जो उसका वेट होगा वो भी 2.5 to 3 kg रहेगा। और जो लेनिगो है वो जनरली डिसअपेयर होने लग जाता है बेबी की बॉडी से। सो बॉडी में जो फैट होगा वो इंक्रीज होने लग जाएगा, और इसमें जो बेबी बॉर्न रहता है वो 30 वीक में भी बेबी बॉर्न हो सकता है, बट इसमें जो चांस रहते हैं बेबी के हाई सर्वाइवल के वो तभी रहेंगे जब मेडिकल इंटरवेंशन करेंगे या किसी मेडिकल हॉस्पिटल में ही बेबी को डिलीवर करेंगे। मीन्स हाई प्रोफेशनल केयर और एक्टिव प्रोफेशनल स्किल प्रोफेशनल डिलीवर हैंडल करने चाहिए। नेक्स्ट week 36 to 40, the fetus is considered full term at the end of the 39th week of gestational age. It may be 38 to 53 centimeter in the length. The lanigo is gone to accept the upper arms and shoulder. The fingernail extend beyond fingertips. Small breast buds are present on both sexes and head hair is now coarse and thickest. So 34-36 वीक्स में एक फुल टर्म कंसिडर कर सकते हैं, और जनरली जो लेंथ रहता है वो 48 to 53 सेंटीमीटर रहता है, और जनरली जो लैनिगो है वो पूरी बॉडी से तो हट जाता है, बट अपर आर्म्स एंड शोल्डर्स में रहते हैं। एंड जो फिंगर नेल्स होंगे वो एक्सटेंड रहते हैं फिंगर टिप तक, और जो ब्रेस्ट बर्ड्स हैं वो भी चाहे वो फीटस मेल हो फीमेल हो उनमें ही डेवलप होने लग जाते हैं। एंड जो हेयर है वो भी थिकन और कोट हो जाते हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं फीटल के डेवलपमेंट को। तो सबसे पहले तो ये है जेनेटिक, मीन्स अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है तो वो उसके स्ट्रक्चर को फंक्शन को अफेक्ट कर सकती है फीटस की। नेक्स्ट मैटरनल हेल्थ, न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, क्रोनिक कंडीशन। अगर न्यूट्रिशन मालनरिश्ड है, एनीमिक मदर है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्थ को इफेक्ट करेंगी, मदर के हेल्थ से बच्चे को। अगर इन्फेक्शन मदर में है तो बच्चे को भी चांसेस हो सकते हैं होने के। एंड इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, टेट्राजो अल्कोहल, ड्रग्स, रेडिएशन। अभी एक कॉमन है अल्कोहल लेना और स्मोकिंग करना, बट उससे भी फीटस को अफेक्ट पड़ता है। एंड ड्रग्स से या फिर रेडिएशन के एक्सपोजर में आ गए तो फिर टेट्राजोनिक इफेक्ट पड़ेगा बच्चों में। So this is all about the fetal development. So thanks for watching, and kindly like, share and subscribe this channel so that I can prepare more videos and you also gain many information, and you can prepare your notes by watching this content and revise that notes. It will be very beneficial for all of you. Thank you so much.